चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव सर्किट की। लास्ट क्लास तक हम लोग बात किए कैपेसिटिव सर्किट की। इसमें कैपेसिटर से रिलेटेड जो भी बातें थी, चाहे उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग, सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम लोग देखेंगे इंडक्टिव सर्किट की। हियर इज द टॉपिक इज द राइज ऑफ करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट। मीन्स in an inductive circuit, how current rises. This is our objective. हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडक्टिव सर्किट में करंट कैसे राइज करता है, उसी तरह करंट कैसे डिके होता है इंडक्टिव सर्किट में। इन दोनों बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखें अब पहले इंडक्टिव सर्किट के बारे में। तो ये एक इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है। मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको एक रेजिस्टेंस से R से, एक बैटरी लगा दिया एक स्विच के माध्यम से। ये और बी पर मैं दे रहा हूं। जब मैं t=0 पर इस स्विच को मैं पोजीशन A पे रखता हूं तो ये बैटरी से कनेक्ट हो जाता है ये सर्किट, और इस कंडीशन में ये इंडक्टर एनर्जाइज होने लगता है। और जैसे ही मैं यहां से हटा दूंगा ये यहां पर, तो ये इंडक्टर डी एनर्जाइज। अब यहाँ पर इंडक्टर का एनर्जाइज होना और डी एनर्जाइज होने से क्या मतलब है? जैसे कि इंडक्टिव सर्किट के क्लास में मैंने बताया था कि इंडक्टर होता क्या है। एक्चुअली एक कॉइल है, एक कंडक्टर को अगर मैं कॉइल फॉर्म में इस तरह से लगा दूं तो इससे अगर एक टाइम वेरिंग करंट फ्लो कराया जाए तो क्या करता है, यही कंडक्टिंग एलिमेंट ये इस करंट को, ये जो टाइम वेरिंग करंट है आरवी करंट को अपोज करेगा, ये फ्लो होने नहीं देगा। और अपोजिशन के वजह से, चूंकि इसकी कुछ अगर प्रैक्टिकली मैं देखूं तो ये इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा क्योंकि वायर है, कंडक्टिंग मीडिया है। जहां भी कंडक्टिंग मीडिया होगा तो सम लॉस विल बी देयर। तो ये जो अपोज करता है, इस अपोजिशन की वजह से इस अपोजिशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें अलग से एक सोर्स लगाना पड़ता है ताकि करंट फ्लो हो पाए। तो ये कब होगा? ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अपने अक्रॉस, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं, जिसके वजह से ये करंट फ्लो नहीं होने देता, हम लोग देखेंगे। और ये इसके अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हम लोग देखते हैं। और इसी एल डी आई बाई डी टी को, ये अपोज कर रहा है ऐसे, और ये वोल्टेज सोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ताकि करंट फ्लो हो, लेकिन ये अपोज कर रहा है, ये फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो करंट फ्लो होने का कंडीशन क्या है? इनिशियली तो ये करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है। तो जैसे धीरे 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 क्या होगा, जब ये थोड़ा कमजोर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कमजोर, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमजोर होगा, तो ये काउंटर बैलेंस करना शुरू करेगा। जैसे जैसे इसके और इसके बीच में एक डिफरेंस आने लगेगा तो धीरे धीरे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी इस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, मतलब जितना फोर्स इधर से लगाया जा रहा है उतना फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, तो नेट यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब यहाँ पर वोल्टेज जीरो होगा उस वक्त मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और वो मैक्सिमम करंट कितना होगा? T बाई आर। क्योंकि यहाँ पर जब ये यहाँ वोल्टेज जीरो होने का मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट हो गया। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पर करंट सिर्फ आर, रेजिस्टेंस आर की वजह से होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है।
तो आज हम लोग इसके एक्सप्रेशंस को देखेंगे। कैसे हम लोग देखेंगे कैसे करंट राइज होता है। इनिशियली तो करंट फ्लो नहीं होगा इसमें, क्योंकि अपोज इतना ज्यादा करेगा कि करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा। तो मैं इस सर्किट के माध्यम से मैं देखता हूं। अगेन आई विल अप्लाई केवीएल। इस सर्किट में मैं केवीएल अप्लाई करता हूं तो क्या मुझे मिलता है, जरा देख। मुझे क्या मिलता है यहाँ पर जी? V इज इक्वल टू, यहाँ का वोल्टेज कितना है? आई आर, प्लस यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? एल डी आई बाई डी टी, जो अपोज कर रहा है। और वही अपोजिशन वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो अपोजिशन की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये यहाँ का वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ की वोल्टेज, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है। तो अब मैं देखना चाहूंगा यहां से, अगर मैं देखो, अगर इफ आई consider this, V minus IR is equal to L di by dt, and again if I am having di by V minus IR is equal to 1 by L dt. Can I have like this? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगा तो बताओ। डी आई बाई वी माइनस आई आर 1 बाई एल। ओके। बेसिकली मुझे यहाँ पर निकालना है, क्योंकि करंट, इनिशियली करंट क्या होता है? ये जीरो होता है। अब मैं देखूंगा राइज ऑफ करंट है, एक्सप्रेशन है राइज ऑफ करंट, तो मैं करंट का एक्सप्रेशन निकालना चाहूंगा। तो यहाँ पर डी आई बाई वी माइनस आई आर है, तो मैं यहाँ से डी आई, यहाँ से निकालना चाहूंगा करंट आई। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डी फॉर्म में तो इंटीग्रेट में करूंगा। तो इंटीग्रेट करने से पहले मैं देखूंगा यहाँ पर माइनस आई इंटू आर है। अगर सिर्फ माइनस आई होता तो माइनस साइन देते यहाँ पर, तो लॉग फॉर्म में आ जाता। लेकिन आर इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? माइनस आर डी आई बाई डी माइनस आई आर। अब माइनस आर इधर मैंने मल्टीप्लाई किया है ऊपर, तो इधर भी माइनस आर करूंगा, माइनस आर बाई एल होगा। हाँ, now integrating both sides, now integrating both sides, integration minus r di by v minus ir is equal to minus r by l integral dt. Can I have this? अजय, मुझे लग रहा है ये सही है। ओके, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा? दिस इज द log ln v minus ir natural log is equal to minus r by l into t प्लस एक कांस्टेंट k। ठीक है। तो मैं यहां से कांस्टेंट k को यहां से एस्टेब्लिश मैं करना चाहूं, तो सब्स्टिट्यूट क्या करूं मैं कि मुझे ये k का वैल्यू मिले। तो मैं यहां पर देख रहा हूं एट e इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0। इनिशियली देखा कि इतना अपोज करेगा कि करंट फ्लो होना मुश्किल है। ये जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो व्हेन एट t इज इक्वल टू 0, यहां पर मैं लिख दूं एट t इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0। सो substituting in this ln
v, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 है, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू t, यहां भी 0 हो गया, तो इक्वल टू t. Now I'll substitute this value of k in this equation. इस इक्वेशन में k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो मैं देखता हूं क्या लिख सकता हूं मैं, तो मैं क्या लिखूं, ln नेचुरल लॉग v माइनस आई आर इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी प्लस k की वैल्यू ln v, ln v. यहां से मैं ln अगेन v माइनस आई आर डिवाइड बाई v हो जाएगा, इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी. So I'll take anti-logarithm again to find this term. So anti-logarithm, if I'll have v minus IR divided by v is equal to e raised to the power minus RL into t. ठीक है. Now I am considering here time constant. जैसे कि उसमें रेजिस्टेंस के कैपेसिटेंस की कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि टाइम कांस्टेंट टाउ कितने के बराबर होता है, आर इंटू सी. यहां पर टाइम कांस्टेंट, यहां मैं देख लो, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर. यहां मैं टाइम कांस्टेंट टाउ एल बाई आर को कंसीडर करता हूं, तो यहां पर आर बाई एल है, तो और टाइम कांस्टेंट टाउ मैं लिखता हूं, तो यहां से लिख सकता हूं v माइनस आई आर डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. कैन आई हैव दिस, यहाँ आर बाई एल है और टाउ एल बाई आर है, तो 1 बाई टाउ हो जाएगा ना, तो इट इज, so in that case v minus IR minus IR is equal to v into e raised to the power minus t by tau. So IR, if I'm having, is equal to v minus v into e raised to the power minus t by tau. I'm having this. Okay? तो मैं मिटा दूं इधर से. ओके, तो यहां से मैं देखूं आई आर, आई इंटू आर इज इक्वल टू वी इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, एंड आई इज इक्वल टू वी बाय आर इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, and v by r again it is the im. Here v by r equal to im. So it is im
1 minus e raised to the power minus t by tau. Why it is Im? Because then this will become short circuit. Then in this circuit only R will present. And in that case, current will be V divided by R. And that is the maximum current. So I is equal to into 1 minus e raised to the power minus. This I am having question number 1 for the current. This is the rise of current. How it is rise of current? I'll show you on a graph. If I take the graph of this current, I'm having the graph. See, if I'm having the graph, let me draw the graph. If this is the time axis t, this is 0, and this is the axis for current I. Okay, when t is equal to 0, I mean this is equal to 0, t is equal to 0, and t is equal to 0, I is equal to what? E raised to the power 0 is 1, 1 minus 1 is 0, I mean 0, I is equal to 0. Previously there considered also t is equal to 0, at t is equal to 0, I is equal to 0. So this is the point. When t tends to infinity, I, when t is infinity, e raised to the power minus infinity is 0. So this became the 0. So Im into 1. So I is equal to Im. So I'm having here the point Im, and this is. So it starts rising exponentially, means current starts rising exponentially from I is equal to 0 to I is equal to Im. Its final value, its final value is maximum current Im. Okay. So this is the graph for the rise of current. See here, current rising exponentially when t moves towards infinity. Means with time, current rises in inductive circuit exponentially, and it will become maximum current Im when t tends to infinity. Okay. तो यहां से एक और बात भी समझ गया आ गई. When t is equal to 0, I is equal to 0. Initially, this inductor behaves like initially inductor acts like acts as what? When I is equal to 0 means open circuit. Open circuit. And t tends to infinity, I is equal to Im, the maximum current. That means at a steady state, that means at a steady state, the steady state inductor acts
as short circuit. Short circuit. Why it is short circuit? See here, maximum current will flow only and only in this circuit whenever this element becomes short circuit. Only and only condition. Otherwise, if there will be any dissipative element here, so some voltage will drop here also. So if voltage will drop, then difference of voltages will be there. So current will be some lesser. That's why at steady state, inductor acts as short circuit. That's the idea about inducting circuit and is the rise of current in inductor. Okay. In next class we will see the decay. Okay. For today it's enough.